Hello guys, hello. आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी? जल्दी से बता दो, कोई पता लगे मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। कल प्रोफेसर की क्लास में क्या हुआ था? कि कल सेशन नहीं था आप लोग? अच्छा, कल तो सेशन नहीं था ना, सॉरी। सर की क्लास ठीक है नहीं, आई गेस नहीं थी कल। आई गेस क्या मतलब थी ही नहीं। कल हमारे 2 घंटे का सेशन था ना, तो उनका उनका सेशन नहीं था कल। आज माइनर रिसर्च है शायद। भाई देखो, फिर से कह रहा हूँ कि जो भी चीजें क्लियर ना हो अभी तक बता देना पहले सेशन स्टार्ट होने से। ठीक है? मतलब अगर वो केटर करते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को, देन विल इन गुड। अदरवाइज बता देना मुझे। मैंने आगे कल चीजें बात करी थी आगे। लेट्स सी, वीकेंड पे कुछ डिसाइड होता है तो विल सी कि क्या होता है हेलो फिर। सर। हाँ जी। हेलो। हेलो सर, आई ऑडिबल नहीं? सर, सॉरी। मैं कल थोड़ा बाहर था। हेलो सर, ऑडिबल नहीं? ऑडिबल हो? तो सर मैं बोलो बोलो। पूछना चाह रहा था, कल आपने क्या डिस्कस कराया था? क्योंकि कल मैं बाहर था तो क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि आउट ऑफ ओके, ट्रैवल कर रहा था। तो कल हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। ओके, कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया असाइनमेंट था क्वेश्चन कब सर पे। या फिर हाँ 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 हाँ। असाइनमेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे या फिर कुछ लीड कोड अलग से? मतलब प्लेटफॉर्म से ही डिस्कस करे थे, लीड कोड से ही डिस्कस करे थे। हाँ, यू कैन वॉच रिकॉर्डिंग, मतलब आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है? कल ओके थोड़ा सर। डेप्थ में, थोड़ा डिटेल्ड इलेबोरेटिव वे में डिस्कस करते थे बिकॉज वी हैड टू वॉच। दैट्स व्हाई हमने थोड़ा अच्छे से तसल्ली से डिस्कस करे थे क्वेश्चन, मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं थी कल हमारे में। ठीक है? रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ आ जाएंगे। कल एज आई बिलीव काफी लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई है, तो ठीक है, आप भी देख लेना। और और हाँ, और तो क्वेश्चन, चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंपेयर्ड टू इंग्लिश वाला किस किस का हुआ, किस किस का नहीं हुआ? बता दो, मैं पढ़ाने वाला हूँ वैसे तो। ठीक है, मतलब मैं कवर कराने वाला हूँ, बट स्टिल किसी ने ट्राई करा, नहीं हुआ, हुआ, XYZ ट्राई नहीं कर पाए,
सब बता दो चैट में जल्दी से, नहीं हुआ। ओके, बाकी सब डन। ओके, ग्रेट ग्रेट उमेश, गुड। टू टेस्ट केस फील्ड, ओके, नो प्रॉब्लम, विल मेक ऑल टेस्ट केसेस पास। मे बी कुछ कंडीशन हुई जैसी, जो यू मस्ट बी मिसिंग सम आउट, है ना प्रीति? अनएबल टू सॉल्व, नो प्रॉब्लम, I'll solve right now in the class in different great, शाबाश। और कोई? भाई सॉल्व नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से लिखो, बिना टेंशन के लिखो, तो क्या दिक्कत है, मैं सॉल्व तो कराने वाला हूँ ना, क्या हुआ? अगर नहीं भी अटेम्प्ट कर पाए तो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे अलग और कुछ दिक्कत समस्या है किसी को तो वो भी बता सकते हैं। Facing very much issue in coding part of linked list, what to do? Hmm. Preeti, what do you feel about the theory? Is it clear? Like, do you have it? Do you feel confident in the theory part of linked list? By the theory part, I mean that what is head, what is tail, what is linked list class, how to add nodes, why do we need to add nodes, and how the linking of nodes work. Like, do you know all this stuff? If not, then that's why you are feeling. That's why you are having an issue in the coding part of the language, because that is a very basic thing now. And if you are not aware about what is linking and how head and tail works towards the linking of different nodes, so that is also a problem. है ना? That's clear consistency. हाँ. That's why somewhere somehow you are having an issue, है ना? So I would suggest कि पहले theory 100% कर लो, like make theory part 100% and then try to try to jump to the coach. Subavesa makes different class for node and English out of main, and in doubt class we do it by functions are both. Definitely, man, definitely. Athava. Uh, there is no such limitation that you have to create different classes, that then only you can accept, then only your response will be accepted. That's up to you, है ना? That's up to you, that whatever approach you are following. And I would say in whatever approach you feel confident, just solve through that only. अगर दोनों में मजा आ रहा है तो दोनों से करो, ठीक है? इसको कंफ्यूजन की तरह लोगे अगर, कि वहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ ऐसा हो रहा है, तो मतलब then it is a problem. ठीक है? Don't take it as a confusion, just take it as an approaches you are getting, you are you are getting to know through different मतलब classes. There we are using that approach, here we are using this approach. ठीक है? That may be confusing up to an extent, but somewhere somehow you will feel that हाँ कि some it will help you, and it will help you basically. ठीक है? अगर एक ही अप्रोच को लेके उसी को डिस्कस करते रहेंगे तो मतलब you will not and you will read any solution of from some different approach, then obviously मतलब वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, ठीक है? अब मैं हर क्वेश्चन में आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ डिफरेंट तरीके से, चीजें वही है, प्रिंट कराने लिंग्लिस्ट को, नोट्स ऐड कराने के लिए फंक्शन लिखना है, एक लिंग्लिस्ट की क्लास लिखनी है, ठीक है, एंड देन अपने लॉजिक का एक फंक्शन लिख रहा है। बट आई एम समवेयर ट्राइंग कि मैं जितना डिफरेंट तरीके से हो सके उतने डिफरेंट तरीके से मैं यही चीजें रोज प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक है? दैट इज माई मेन मोटिव है। ओके, फर्स्ट डिफरेंट क्लासेस, एक सेकंड। सर मैंने कोड रेडी किया है लेकिन उसमें ये एरर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे, एंड में याद दिला देना, ठीक है? But landing is not always used in codes, right? Okay. I would say you are partially right, ठीक है? I would say you are partially right, but it's not कि जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है that is waste, है ना? मतलब that is not useful. Somewhere you will feel, somewhere you will get, मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं वो चीजें टकराएंगी. You will encounter those things, ठीक है? But अगर वो पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दैट मे बी somewhat a bit crucial too.
है ना। तो इट्स बेटर जो जो चीजें पढ़ाई जा रही है तो है नहीं कि कुछ फालतू में पढ़ा है या कुछ काम नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपने पब्लिक क्लास इंग्लिश अभिषेक क्यों बनाई है? आपको मेन के अंदर बनानी थी ना, जूम लिंक। हेलो गिरिराज। चलो ये अभिषेक के लास्ट में मतलब 7-4 जो भी आपका नाम है अभिषेक है बिलीव, बाद में ये लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करते हैं। जूम लिंक भाई, कोई जूम लिंक ड्रॉप कर दो। चलो बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं यार, फिर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है आज क्लास आप लोगों को ना। चलो जी, लेट्स गो। चलो, क्वेश्चन है कंपेयर टू लिंक लिस्ट, ठीक है, मतलब कि अपने को दो लिंक लिस्ट मिलने वाली है, ठीक है, दो लिंक लिस्ट को अपने को कंपेयर करने का, ठीक है। कंपेयर द डेटा इन द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट टू चेक इफ दे आर इक्वल, ठीक है। इफ ऑल डेटा एट्रीब्यूट्स आर इक्वल एंड द लिस्ट आर ऑफ सेम लेंथ प्रिंट वन अदरवाइज जीरो। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 नल, ऑब्वियसली ये बराबर तो कहीं से भी नहीं है, ठीक है। The first line contains two integers m and n, the number of nodes in the first linked list and second linked list, ठीक है, मतलब कि ये दो जो है ये फर्स्ट लिंक लिस्ट के नोड्स रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये एक जो है ये सेकंड लिंक लिस्ट के नोड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ मैंने यहाँ पर भी वो 1 और 2 वैल्यू दे रखे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड नोड ऑफ फर्स्ट लिंक लिस्ट एंड 1 वैल्यू दे रखे फॉर द वैल्यू फॉर द सेकंड लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकंड लाइन कंटेन्स एम स्पेस इंटीजर्स, ठीक है, वो बता दिया मैंने। एंड थर्ड लाइन कंटेन्स, यहाँ पे गलती है थोड़ी, थर्ड लाइन कंटेन्स एन स्पेस्ड इंटीजर्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एम फर्स्ट लिंक लिस्ट के लिए एंड एन सेकंड लिंक लिस्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। Tarun Mura. Yes. I'm in English. I'm sorry. So I'm just saying that we have 2 and 1 over here. 2 represents the number of nodes for first linked list, and 1 represents the number of nodes for the second linked list. And here 1 and 2 are the values for the nodes for the first linked list, and 1 is the value for a node for second linked list. Okay. So here you can see we have second line contains m spaced integers. This is the second line. This contains m spaced integers, and third line contains n spaced integers. Here we have, here it is written wrong. Here it is wrong. It should be n spaced integers. M and n, though the two values we have, and it must be m spaced. It must be n spaced. Okay, that's one thing. Output is please write comments while coding. Okay, ठीक है. I'll take care of it from now onwards. And if I miss it somewhere, you can stop me then and there. I'll add the comments. Okay. Output must be compare the two linked list and print one if the lists are equal. Otherwise, print 0. No problem. Okay. Chalo. Let's discuss the approach. Okay. Let's discuss the approach that how we can proceed with this kind of question. Okay. We have two linked lists. It has node 1. It has value 1. It has value 2. It has value 3. Okay. And then it is null, obviously. Okay. And then we have second linked list. It has value 1, it has value 2, it has value 3, it has value 4, and then it is null. Okay. Here you can see that up to first three nodes, the values of each node is equal. Okay. The value of each node is equal. It is the first node is equal to first node, the second node is equal to second node, the third node is equal to the third node. But after 3 nodes from the first linked list, we don't have any another node. Okay. Then it comes null. Okay. So we have 3 nodes here and we have 4 nodes over here. Okay. So I need to take care of two things, that the values of each node of both linked lists must be equal. Linked list must be equal. Okay. I need to take care of the values. Okay. The values of respective nodes. Okay. The first node of first linked list, the first node of second linked list. So value of the respective nodes of from each linked list must be equal. Okay. So now I have taken care of this thing, that the value of the respective nodes from each linked list, they are equal. Okay. They are equal. No problem in this.
they are equal, definitely they are equal. But after this I need to even take care of the number of nodes we have. ठीक है, suppose here after just comparing the values, suppose if I don't take care of the number of nodes, so if I'll say कि just start from the head, ठीक है, just start from the head and just reach to the null and compare the values, ठीक है. And here I can see that if I start from head over here and if I end to the null, I can see that the values are getting matched. The values are getting matched, but I will not say definitely both the linked lists are not equal. So I need to take care of the number of nodes. Okay, I need to take care of the number of nodes in both the linked lists. ठीक है, in both the linked list. अब इसके there are different ways of doing that. ठीक है, there are different ways of doing of taking care of the number of nodes. First we have that we are getting two integers as input m and n. ठीक है, accordingly we can check that if the value of m and n are not equal. ठीक है, if the value of m and n are not equal, then obviously there is no chance of the of the linked list to be equal. ठीक है, if we have 5 nodes in one linked list and if we have 7 nodes in another linked list, there is no chance of the linked list to be equal any day. There is no chance. ठीक है, but still we can't rely. ठीक है, we can't rely on it. So what we will do? We will look it out into the code, that how we will manage this particular thing of of just taking care of the number of nodes we have. Okay, this was just a tweak in this particular question, that we have to take care of the number of nodes. Okay, other than that there is no such problem in this particular question. Like, it is simply very easy. Okay, it is very easy. Okay, and also there can be an edge case that if both the both the linked lists are empty, and this can be also one of the case. So we can also take care of that if somewhere our one of the test case gets failed even after covering all the cases, so that may be possible that it is getting failed due to that particular case. है ना? So this was all about the question, that what we want to do, how we will do. है ना? Now let's start the coding part. Give me a second. I'll arrange the things. Let's go. Let's start the coding part. I'll put it here. ठीक है जी, कोड कर लेते हैं. हाँ, सही है ना ये. चलो, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास 2 इंटीजर्स थे. ठीक है, हमारे पास 2 इंटीजर्स है. वी हैव m एंड वी हैव n. ठीक है, तो नाउ लेट्स डू व्हाट. लेट्स ठीक है, scanner sc equals to new scanner system.in. ठीक है, int m equals to sc dot next int. ठीक है, int n equals to sc dot next int. ठीक है, we have two integers, that is m and n, and they will represent what? They will represent the number of nodes for our each particular linked list. Okay, now let's come to our what? Now let's come to our logic first. Okay, let's come to our logic, and then we will come back to this declaring main and all. Okay, give me a minute. हाँ, चलो क्या करते हैं, अपन पहले बना लेते हैं एक क्लास नोड. ठीक है, क्लास नोड बना लेते हैं और इसमें एक डिक्लेयर कर देते हैं डेटा वैल, और फिर एक डिक्लेयर कर देते हैं क्या, नेक्स्ट. ठीक है, तो नोड नेक्स्ट कर देते हैं. ठीक है, ये 2 चीजें डिक्लेयर हो गई. अब जब भी हम ये नोड को क्रिएट करेंगे तो हम एक वैल्यू लेंगे. ठीक है, एक वैल्यू लेंगे, उसके बेसिस पे क्या करेंगे, दिस डॉट वैल इक्वल्स टू वैल. मतलब जो मेरे पास पैरामीटर में वैल्यू आएगी उसको मैं इस पर्टिकुलर वैल से इक्वल कर दूंगा. हेलो सर. हाँ बताइए सर, भव्य सर, तो क्लास जो नोड होती है वो तो मेन क्लास से अलग लेते हैं, बाहर लेते हैं. आपने मेन क्लास के अंदर ही ली नेस्टेड क्लास. मेरे मेन क्लास है. अरे यार, चलो ठीक है, इसे एंड में सेग्रीगेट कर देंगे. मतलब मैंने गलती कर दी. ये मेन क्लास नोड जो है ये अलग होनी चाहिए. ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, इसे
यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, क्लास नोट बन गई हमारी। ओके, ठीक है, क्लास नोट बना लिया हमने, वैल डाल दिया उसमें, नोट नेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। और हाँ, कुछ गलती नहीं ना इसमें, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं अपना फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक इंट कंपेयर, ठीक है। कंपेयर एक फंक्शन बनाते हैं, इसमें लेते हैं नोड h1 और नोड h2, ठीक है। मतलब डेफिनेटली मेरे पास दो हेड्स आएंगे ना, दो लिंक लिस्ट है यहाँ पे, मैं दो लिंक लिस्ट से डील कर रहा हूँ, तो मेरे पास दो हेड्स आएंगे, ठीक है। दोनों हेड्स को मुझे अकॉर्डिंगली हैंडल करना है, ठीक है। अब उन्हें हैंडल करने के लिए क्या करेंगे हम, उन्हें हैंडल करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले तो मैं इन्हें जो है अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ptr1 बना लेता हूँ h1 के लिए, एंड ptr2 बना लेता हूँ, ptr2 इक्वल्स टू h2, ठीक है। दो मैंने नोड्स बना लिए h1 एंड h2, ठीक है। अब क्या चेक करने का अपने को, ये चेक करते हैं कि भाई जब तक ptr1 एंड ptr2 दोनों दोनों जब तक नल पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है, दोनों, ठीक है। अब मैंने एक चीज मैं बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ, दोनों दोनों से मेरा क्या मतलब है, इफ ptr1 इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है, एंड ptr2 इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। जब तक we will run the loop till the moment when both the linked lists don't reach their null, ठीक है, when both the linked lists don't reach their null, ठीक है। now why I'm saying this now why I'm saying this I'll tell you in a minute, ठीक है, I'll tell you in a minute when we will reach when we will come out from this while loop, I'll tell you that why I have put this condition, ठीक है। Okay, so now since we are iterating through each and every node, we are iterating through each and every node of both the linked lists. So I told you in the very beginning that I need to compare the values of both the linked lists. Okay, okay. So the best thing to compare the value of the both the linked list is if ptr1, ठीक है, if ptr1 dot val, ठीक है, so this ptr1 dot val will give me the value of my particular linked list of my particular node, ठीक है। Here I have defined val, so this val will give me the value of uh, that particular node. It will give me the value of that particular node is not equals to, I'm saying if it is not equals to ptr2 dot val, that means I'm saying if this value is not equal to this value, if this value is not equal to this value, that means whenever this condition gets true, that means both the linked lists are not equal, so I'll simply return 0, finish, ठीक है। I'll simply return 0, that means that both the linked lists are not equal whenever this condition gets true, ठीक है, whenever this condition gets true। And since we are iterating through every single node, so definitely if somewhere this condition arises, if somewhere this condition gets true, we'll simply return 0 and we'll simply come out, ठीक है। Now since I'm iterating through each and every node, I need to move the pointer1 and pointer2 to their next values, ठीक है। So pointer1 will equals to pointer1 dot next, ठीक है। So वो उसके आगे आएगा, जिससे हम क्या करते रहेंगे, जिससे हम आइटरेट करते रहेंगे, पॉइंटर टू इक्वल्स टू पॉइंटर टू डॉट नेक्स्ट, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नाउ we have given a command to iterate through the nodes, ठीक है। We have taken care of comparing the values. Now comes the main part, when the uh, when what when the nodes are unequal, ठीक है, when the nodes are unequal, ठीक है। Now I told you, ठीक है, I told you here that even if I'm giving a condition that if pointer1 is not equal to null and pointer2 is not equal to null, ठीक है, pointer1 is not equal to null and pointer2 is not equal to null. Why I have given this condition? See, let me go down. ठीक है। Suppose here I have 3 nodes, ठीक है, here I have 4 nodes, ठीक है, this is null and these are connected, obviously these are linked,
then I have null. ठीक है, I have said that if pointer 1 is not equals to null, and pointer 2 is not equals to null. ठीक है, दैट मीन्स जब तक दोनों में से कोई सा भी नल तक नहीं पहुंचा है, जब तक दोनों में से कोई सा भी नल पर नहीं पहुंचा है, अगर ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, ये कंडीशन कब फॉल्स होगी, अगर इन दोनों में से कोई सा भी कोई एक भी अगर नल पे पहुंच गया तो ये लूप टूट जाएगा. This loop will stop then and there and will come out of that loop. Why? Because suppose I have 3 nodes here. Suppose I have 3 nodes here. ठीक है, and after 3 nodes I reach null. ठीक है, I reach null. So this condition will get false. But here after reaching 3 nodes, I still have a node left with me. ठीक है, so this condition will be true, but this condition will be false. But I have used AND operator here. So even if a single condition gets false, it will stop then and there. Okay, so I am stopping it just to check if we have if we do not have the same number of nodes in the linked list, in both the linked lists. Okay, so that's how I have planned to check. Okay, I'll just put the chart over here. That's how I have checked. That's how I've taken care of, to give a check if the number of nodes are unequal. Okay, now let me read. Pointer 1 dot will is not बहुत बढ़िया सर. इसके लिए m is not equal to null scanner क्लास में भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं सर, बट दैट इज अगेन a simple approach. ठीक है, there you are comparing the value, there you are comparing just the values. ठीक है, if someone says to you that no, just don't compare the values, compare it through the nodes. ठीक है, compare the nodes, that if we have an equal number of nodes, so for that you need to do this, है ना, what I am saying. काउंट मैच कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ब्रो, कर सकते हैं, वही मैंने एक्सप्लेन करा कि किस केस में नहीं कर सकते. ठीक, so now since we have come out of our while loop, now we will check if pointer 1 is not equals to null. ठीक है, or pointer 2 is not equals to null. ठीक है, so we will return 0. ठीक है, अगर इन दोनों कंडीशन में, अगर इन दोनों में से किसी पे भी वो नहीं जाता, दैट मीन्स कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो बराबर है. ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, किसी को समझ आया? ये किसी को भी समझ आया कि मैंने ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है? मैंने ये कंडीशन लगाई, ठीक है, फिर मैंने उसके बाद ये कंडीशन चेक करी. समझ आ गया क्या सबको? अरे बहुत बढ़िया भाई. हेलो सर. हाँ जी बताओ. सर जैसे हमने while लूप के अंदर इफ कंडीशन लगाई, रिटर्न 0 कर दिया, तो सर इसके एल्स में हम रिटर्न 1 कर देते और while लूप से बाहर निकलकर रिटर्न फिर लास्ट 0 कर देते. ऐसे नहीं कर सकते थे कि अगर हाँ, बट हाँ बताओ सर, अगर ये इटरेट होते रहेंगे, दोनों इक्वली इटरेट होते रहेंगे, पॉइंटर नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ये आपस में इक्वल नहीं आते हैं तो रिटर्न 0 कर दो, इक्वल आते हैं तो एल्स में 1 रिटर्न करा दो सर. एक तो बट ये अगर मैंने ये तो वही बात होगी ना फिर, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, अगर इसकी वैल्यूज 1 2 3 बराबर आई, ठीक है, इसमें 3 पॉइंटर है, इसमें 4 पॉइंटर है, ठीक है, इसकी 1 2 3 इसकी 1 2 3 से मैच कर गई, ठीक है, तो मैच कर रही है, ठीक है, अगर वैल्यूज, और आप कह रहे हो मैं 1 रिटर्न करा दूं, बट फिर तो वो मतलब वो लॉजिक नहीं बनेगा ना. समझ गए क्या कहना चाह? एल्स में सर हमने 1 रिटर्न करा दिया, ठीक है सर, तो हर नोड के लिए 1 रिटर्न कराता रहेगा. अच्छा सर, हर नोड के लिए 1 रिटर्न कराएगा. ओके सर, ठीक है, तो सर यहाँ नहीं कराएगा कि हर नोड के लिए 0, हाँ हर नोड के लिए 0 रिटर्न नहीं कराएगा. हाँ, यहाँ क्या करेगा, यहाँ रिटर्न कराएगा 0, पर ये रिटर्न 0 करने के बाद तो ये फंक्शन ही खत्म हो गया ना. उसे इंट चाहिए था फंक्शन को, उसे इंट मिल गया, 0 खत्म. बोले यहाँ तो फ्लो ही खत्म हो गया ना. अपने फंक्शन को क्या चाहिए, अपने फंक्शन को इंटीजर चाहिए रिटर्न में, मैंने उसे यहाँ इंटीजर रिटर्न कर दिया, तो उसको बाकी किसी चीजों से क्या मतलब है, किसका खत्म बस. हाँ तो सर इसके नीचे ब्रेक यूज नहीं कर सकते, रिटर्न 0 के बाद ब्रेक, वो हो जाएगा कीवर्ड. ओके सर, ठीक है.
can do that, correct. देखो else में so what is the need of for 23rd line, what is the need for 20th? मैं यही तो मैं पूछ रहा था कि समझ आया कि नहीं. That's what I was asking, that did you guys get it or not? I think you didn't, है ना? See, here I have checked. 23 line. Okay, let me explain. Here I have checked that go up to the point where pointer one is not pointer one becomes equal to null and pointer two becomes equal to null. Okay, I have iterated. Okay, I have iterated, but I want to see. Okay, I want to see if after running this particular loop, okay, after running this particular loop, which particular linked list reaches to the null. Okay, suppose ऐसा हुआ, suppose what happens is I had 1 2 3 4 loop, 1 2 3 4 nodes. Okay, 1 2 3 4 nodes, then I had null. Okay, this is my L1, this is my L2. I had 3 nodes, then null. Okay, what happens after 3 nodes? This particular linked list reaches the null. Okay, this particular linked list reaches the null. My while condition will become false. Okay, my while condition will become false. But after 3 nodes, this particular linked list still had a node. Okay, it is here. Okay, now what I need to do? Okay, so what will happen? Here I will not get my answer. Okay, here nothing is happening. I am just comparing the values. I am not taking care of the number of nodes. Okay, I'm not taking care of the number of nodes. Okay, so what happens? This loop will definitely get stopped whenever this particular condition will get false. Okay, amongst the 2 nodes, whenever a single linked list, whenever a linked list will reach to its null, the while loop will get stopped and I will not get my answer. Okay, I will not get any of the answer. Okay, now what happens? This particular linked list has reached its null, but this particular linked list still has a node. So I am checking that after running the while loop, okay, after running the while loop, if is there any particular, is there any particular linked list after running the while loop? Is there any linked list which has not reached its null? Okay, which has not reached its null. So what will happen? If there will be a linked list which has not reached its null even after running this particular while loop, I will say that there are unequal number of nodes in both the linked lists. Like both the linked lists don't have same number of nodes. Why? Because if after running this while loop, still we have a linked list which has not reached its null. Still we have a linked list if it has not reached its null. That means that particular linked list has unequal number of nodes as compared to the linked list who has reached its null. Okay, that's what I wanted to take care of, and that's why I have written this particular condition to check. Okay, to check is for non-equal sizes. Right, clear sir, बहुत बढ़िया, great, that's great. हेलो, गुड इवनिंग सर. Yes, हाँ जी, good evening. सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब जो मेन फंक्शन है वहां पे हम डायरेक्टली चेक कर ले इफ m इज नॉट इक्वल टू n, तो हम लोग को सर लाइन 23 लिखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हाँ जी, बस यही सेम चीज मैंने किसी और ने भी पूछी थी, मतलब काफी लोगों ने पूछी थी. बट सी m and n are 2 numbers you have in your inputs. ठीक है, that's fine. But if someone asks you that don't compare m and n, just take care of this particular condition through comparing the nodes. Okay, through comparing the nodes. Then what will you do in this case? Okay, then you have to take care of the number of nodes. So that's why I'm just going it through this approach, because that is very easy. You will just compare m and n, and there if they are not equal, you will simply cover that particular case there. But this is why I'm opting for this approach here, because it is somewhat a little bit tricky. Not tricky, but it is somewhat a little bit confusing. That's why I'm like covering this particular approach here. Got Okay. it? Yes. You can do in that way also. Like there is no problem, but still. Yes. Okay. ठीक है, तो ये बातचीत अगर हमारी हो गई है, then this is okay. We have another where we can't we check. This is general case. It will work for all. Right. It will work for all. Okay, great.
Now we have completed our compare function. Now let's take care of what? Let's take care of our scanner class. ठीक है, अब स्कैनर का कर लेते हैं जुगाड़. स्कैनर में बहुत सारी चीजें हैं जो अजीब लगेंगी. ठीक है, फिर से again I'm repeating that I try to do it with a different approach. So here I also I'll do something different. ठीक है, don't get confused, just be ready. ठीक है, just be ready. Head 1 equals to null. It is for obviously linked list number 1. ठीक है, now I'm saying node ptr equals to null, just to iterate, and not to change the value of head 1. That's why I'm saying it. Okay, now I'll write something. Just tell me if you guys know about it or not. I'm saying if while m minus minus is ab batao, do you guys know about it or not? That what is this arrow? Is this arrow or something like that? कुछ भी नहीं पता. बहुत बढ़िया, बस यही था मेरा मोटिव बताने का. सुमित को पता है, ग्रेट, बहुत बढ़िया. पॉइंटर ओके, ठीक है. सी बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ. पोस्ट डिक्रीमेंट, we can say that post decrement plus comparison. Okay, so what I'm doing over here, I'm saying m minus minus is greater than 0. ठीक है, ये 3 माइनस की लगा दी मैंने, 2 ही माइनस है यार. हाँ, I'm saying m minus minus is greater than 0. I'm saying कि भाई decrease m. ठीक है, deduct 1 to m. ठीक है, if suppose I have value of m is 3. ठीक है, I'll say 3 is greater than 0. Yes. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ. ठीक है, मैं पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो हेयर m will come. ठीक है, हेयर m will come, m will be definitely equal to 3. ठीक है, and 3 minus minus, ठीक है, अभी वो 3 ही रहने वाला है. ठीक है, and I am side by side comparing it with 0. ठीक है, कि it must be greater than 0. So 3 will come, it will be greater than 0. We'll run the loop. ठीक है, post decrement we have used post decrement, so here it will come again, but we had 3 minus minus, so definitely the value will become 2. ठीक है, the value will become 2. It is greater than 0. Okay, no problem. But next time the value will come, it will be 1. ठीक है, again the loop will there one or more iteration will take place for the 3 2 1. Now we had 1 minus minus, that means the next time the value will come, it will be 0. Is 0 greater than 0? No, the condition will become false. Okay, the condition will become false and will come out of our loop. So for that, why I'm explaining this iteration, we had suppose we have been given integer 3. That means we have 3 nodes. So obviously, so we want to run our while loop 3 times. So I'm just explaining that we can run while loop 3 times by using this particular approach, and that's how this particular thing works. This minus minus represents for the decrement, and this greater than 0 obviously is for comparing with 0. Okay, so this is something new which I wanted to tell you. So you have not used comments. Yes, I have not used comments. Thank you for reminding me. Here I'll say linked list class. ठीक है, logic for comparing two linked list. ठीक है, here I am main class. Okay, so I don't think I need to give comments in the main class. बता देना, tell me if you need it somewhere, है ना. So I am saying do the deduction in m till the moment it is greater than 0. Okay, so now I have taken care of what? I have taken care of the iterating the loop through right number of times. If we have 3, so it will iterate 3 number of times. 3 बार वो iterate करेगा. If we have 4, it will iterate 4 times. Okay, so no problem in the iteration. Now just I need to I need to create nodes. I need to create nodes for the integers, for the values I'm getting as input. ठीक है, suppose see now let me clear you one thing. Let me get it clear one thing. I need to enter the value over here, right? I need to enter value over here. Now tell me I have iterated the loop m number of times. Suppose I have m equals to 3, so I'll say m
I'll say m will get 3 inputs. Okay, so what I can do is, instead of declaring a variable and storing a value in that and passing that particular variable here, I'll simply say sc dot nextInt. sc dot nextInt. Okay. Why I did this? Because I didn't want to declare a different variable just to store the values and to pass that value in this particular in this particular node. Okay, just to create the node and just to push the value in that node. So simply I have just given sc dot nextInt. That means it will take the value input from the user and it will create node side by side. Okay, so it will work perfectly fine. Can we make function for it? You can make. There is no foundation, man. मतलब फंक्शन क्यों नहीं बना सकता? क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। बाउंडेशन नहीं है यार, बट ठीक है। And I'll say if head1 equal null, ठीक है, that if we have still the head of this particular linked list equal null, then do what? Head1 equals to temp. Okay, head1 equals to temp and ptr equals to temp. ptr will be equals to this particular new node which we have created. Okay, obviously I have initialized my head as null. Obviously I have initialized my head as null. Okay, head is equals to null and I have just added a node. Okay, I have just added a node, so I have given a condition if head equal null. If head equal null, so do what? Do head1 equals to temp. Obviously this temp is my new node, so obviously my head will come over here. Okay, and after that this particular condition will not will not be true in any case. So that's why I have written that just do this thing. Okay, and I'll say continue just to continue for this particular thing. Okay, and I'll obviously okay, here where is ptr? Where is ptr? Ptr is equals to null. Okay, so I have given ptr equals to temp. Now obviously I want the ptr to come over here. Okay, so I'll say ptr dot next equals to new node. So whatever new node will be created, whatever new temp will be created, so I'll say ptr dot next equals to temp, obviously to do the linking. Okay, to do the linking, and ptr equals to ptr dot next. Okay, now just focus on one thing. Just focus on one thing. Okay, using loop for input. यार while loop से कर लोगे तो कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। loop तो loop ही होता है ना। Now tell me one thing, is there anyone who doesn't know the meaning, who doesn't know the interpretation of these two lines? Because I have used it everywhere and I want you guys to understand that why I have used it. Is there anyone? Why continue? बता दूंगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर दो। Do we still have any doubt? Do we still have any doubt? No. Is there someone who still doesn't know the meaning of these two lines? अगर सब नो बोलेंगे तो मैं तुम में से पूछूंगा कि एक्सप्लेनेशन दे दो, ठीक है। अगर सबको आता है तो भाई एक्सप्लेन कर देना। अगर कोई ऐसा है कि किसी को नहीं आता तो मैं बता ही दूंगा। तो जल्दी से सब ड्रॉप करो, कोई बाद में मत पूछ लेना। दिस इज टेल ना। चलो एक ने तो ऑनेस्टली जवाब दिया। बोले हाँ तुम ये टेल की तरह भी वो कर सकते हो, मतलब रिजेंबल कर सकते हो। मैंने यहाँ भाई टेल यूज नहीं करा, तो यू कैन रिजेंबल इट एज टेल, ठीक है। कोई है? दीपक वर्मा, यस किस लिए बोल रहे हो? कि समझ आ गया या डाउट नहीं है तो यस बोल रहे हो? मतलब कैसे बोल रहे हो? डू यू हैव डाउट्स? यस में आंसर दो अगर डाउट्स है, अदरवाइज नो में दो। नो डाउट है, चलो ठीक है, एक को डाउट है। गुड, बी ऑनेस्ट मैन। मतलब मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ऑब्वियसली, मतलब मैं यहाँ इसलिए हूँ, ठीक है। हमें इसको डाउट नहीं है, ग्रेट, आयुष को डाउट है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब ना ऐसा करते हैं, एक चीज समझ के देखते हैं, ठीक है। इसे पेंट को लाता हूँ मैं यहाँ पे। एक सेकंड, थोड़ा सा नया नया इनोवेट कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो भाई एक बात बताओ, ठीक है,
एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर कमांड से, ठीक है, इस पर्टिकुलर कमांड से मेरा एक टेम्प नोड क्रिएट हो गया, ठीक है, मेरा एक टेम्प नोड क्रिएट हो गया, ये नोड बन गया जिसकी वैल्यू है टेम्प। अब सुन लो, अब सुन लो, अब मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने दो पॉइंटर्स डिक्लेयर कर रखे हैं, एक पीटीआर डिक्लेयर कर रखा है जो कि नल है, और एक हेड डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, एक हेड डिक्लेयर कर रखा है। दोनों नल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों नल की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, और अगर मेरा हेड नल के बराबर है तो क्या करो, हेड वन को उठा के टेम्प पे रख दो, मतलब कि मेरा हेड वन यहाँ आ गया, ठीक है, एंड पीटीआर को भी उठा के टेम्प पे रख दो, मेरा पीटीआर भी यहाँ आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यू करो, मतलब कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसलिए ये कंटिन्यू लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करो कि ptr डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प, ठीक है, ptr डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। हाँ, ये कंटिन्यू का, सॉरी, ये कंटिन्यू का मतलब है कि अगर, बस मैं यहाँ पे गलत बोल गया, अगर ये फॉर लूप में अगर ये इफ में घुसता है ना और अगर यहाँ कंटिन्यू दिखता है तो इट विल कम हेयर, द फ्लो विल कम टू द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, द फ्लो विल कम टू इन द स्टार्टिंग ऑफ द लूप, इसलिए मैंने यहाँ कंटिन्यू यूज करा है, ठीक है। क्योंकि पीटीआर और हेड जो है अपनी डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, नाउ I don't want the PTR to move further anywhere, ठीक है, to move further anywhere, that's why I've used continue, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आते हैं सेकंड आइटरेशन पे, जब हमारे पास एक नोड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है, we have one node already created with us, ठीक है, we have one node already created with us, ठीक है। Now this particular statement will again get executed, and then will have another, another node which with us, which will have value obviously equals to 10, ठीक है, the value will be equals to 10. There is one node, ठीक है, there is one this node and there is secondly this node, ठीक है। The name of the topic is linked list, ठीक है। We have this and we have this. There is no linking between them till now. There is no linking between them, ठीक है। Okay, the node will be created, the temp is created. Now it will check if head one equals to null. No, it is not equals to null. So this particular block of code will not get executed. ठीक है, this particular block of code will not get executed. Now this ptr.next equals to temp. That means the node which has been created right now, just make it equals to ptr.next, ठीक है, ptr.next equals to temp। मतलब कि ये ptr का next जो है, ये ptr का next जो है, ये इस नोड की तरफ इशारा करेगा, मतलब कि हमने लिंकिंग कर दी भाई, we have linked it, this ptr.next will be equals to temp, that means that ptr.next will point towards the temp, point towards the node which has been recently created, okay। So this is how we do the linking, and after doing the linking, I will put forward, I'll move the ptr to the next node, to the node which has been created, okay। So that's how we do the linking, and that's how we move the ptr to the next node which has been created. Why there is a need to move the ptr to the newly created node? Because obviously I need to add new nodes, and I need to do the linking of those nodes also. That's why I've moved ptr to the recently created node, and it simply resembles the tail. Okay, someone was saying that do we need to use tail in every single question? No, you can do like this. Okay, here just I have done nothing, I've changed the name. Okay, that's the one thing which I've done. हाँ बताओ, आप पूछो भाई। सर हमने जो पब्लिक स्टैटिक दिस कंपेयर फंक्शन जो बनाया है, इससे तो हमने जो लिंक लिस्ट को कंपेयर करा लिया और आउटपुट भी वहां से निकाल दिया रिटर्न करा के। यस सर। हाँ बताओ सही है सर। जो कंपेयर फंक्शन है, कंपेयर फंक्शन से लिंक लिस्ट को कंपेयर कराने के बाद आउटपुट वहां से निकाल दिया रिटर्न करा के, ठीक है। तो सर हम ये मेन फंक्शन में कोड लिख रहे हैं, ये किस लिए लिख रहे हैं? ये इनपुट के लिए लिख रहे हैं या फिर ये कंपेयर फंक्शन का ही कोई पार्ट है? ये इनपुट चल रहा है, ये इनपुट वाला सीन चल रहा है, इनपुट लेके नोड्स बनाने वाला हिस्सा चल रहा है अभी। अब अपने पास दो लिंक लिस्ट है ना? ये हाँ जी सर। तो इनपुट हम एक लिंक लिस्ट के लिए मैंने ये सेट कर दिया, अब सेम दूसरी लिंक लिस्ट के लिए भी सेम एक और ऐसा ही व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। अब बताओ क्या कह रहे हो? लिंक लिस्ट में इनपुट लेने के लिए इंसर्ट कराना पड़ेगा, नॉर्मली इनपुट नहीं लिया जा सकता सर इससे sc.next से, जैसे फॉर लूप से नॉर्मली इनपुट ले। ये कह रहे हो? यस सर, sc.next है। यस सर।
हाँ मतलब तो सर आप ये इसमें कह रहे हो कि लिंक आपने लिस्ट सीधा में, ये लिंक लिस्ट में घुसाने की क्या जरूरत है, पहले स्टोर करा लो फिर वहां से लिंक लिस्ट में डालते रहना, आप कैसे हाँ करोगे? सर, ऐड फंक्शन का यूज करके, ऐड फंक्शन का यूज करके हम नॉर्मल इनपुट ले सकते हैं। बस मैंने यही एक्सप्लेन करा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं यहाँ पर जस्ट मेमोरी बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, सीधा इनपुट यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये एस सी डॉट नेक्स्ट क्या ओके, है, ये एस सी डॉट नेक्स्ट क्या होगा, ये यूजर जो इनपुट दे रहा है उसकी वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एस सी डॉट नेक्स्ट यस उठ के सर। सीधा एज इट इज चला जाएगा, ये कोई स्ट्रिंग तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नो क्या सर। आएगा, यहाँ पर बस एक वो वैल्यू आएगी जो यूजर डालने वाला है, ठीक है। अब मैं उस वैल्यू को किसी और जगह से स्टोर कराकर यहाँ पर डालता, आपकी आवाज कट रही है सर ब्रो, आपका नेट 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 का प्रॉब्लम है कुछ, आप चैट में ड्रॉप कर दो, आपकी आवाज कट रही है। सब प्लीज राइट कमेंट्स आल्सो, वरना चलो ये कमेंट्स वाला सीन है लास्ट में करते हैं, हमारा एक क्वेश्चन भी खत्म नहीं हो पाएगा ऐसे तो, है ना। चलो नाउ आई हैव सॉर्टेड द आई हैव सॉर्टेड व्हाट आई हैव सॉर्टेड द लिंक लिस्ट वन, फर्स्ट लिंक लिस्ट, ठीक है। आई हैव टेकन द इनपुट्स, आई हैव एडेड द नोड्स एंड आई हैव लिंक्ड इट, ठीक है। नाउ आई हैव डन ऑल द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डू फॉर द first linked list. Okay, now let's talk about second linked list. For second linked list, I'm again using this pointer variable and I'm declaring it null again so that I can use it further. Okay, now I'll say node head 2 equals to null. Okay, node head 2 equals to null, and I'll simply copy paste this thing. Okay, I don't need to add nothing else. I'll remove n. Okay, n is sc dot next int if head 2 equal null. Head 2 equal null, make head 2 equals to temp, ठीक है, पॉइंटर इक्वल्स टू टेम्प, कंटिन्यू, ठीक है, सॉर्टेड, सॉर्टेड है जी। तो यहाँ पे अपना जो है इनपुट का सारा सीन खत्म कर चुके हैं हम, ठीक है, इनपुट का सारा सीन खत्म कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मुझे यहाँ लेफ्ट आउट नहीं लग रहा है तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन कर देता हूँ क्या, कि कंपेयर, कंपेयर ही करना है ना अपने को, लास्ट में कंपेयर ही करना है, कंपेयर से अपना जो है वो आने वाला है हेड 1 और हेड 2, ठीक है। कंपेयर कर देगा हेड 1 और हेड 2, ठीक है। जो भी आएगा वो प्रिंट होकर मेरे पास आ ही जाएगा, ठीक है। रन कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, लेट्स रन इट, लेट्स रन इट, वेट, लेट मी कॉपी पेस्ट, लेट मी कॉपी पेस्ट, what is my expected output, 0 is my expected output in this case. Will I get 0 or not? Yes, I got 0. Let's submit it. So can I compare m is not equal to and then simply return 0? SK, भाई ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, या तो तुम अटेंटिव नहीं हो क्लास में, है ना। Maybe this can be the case. चलो कोई नहीं, होता है, ठीक है। तो वी आर सिंपली डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ आई विल आस्क एवरीवन टू ड्रॉप इट इन द चैट दैट आर यू गाइस क्लियर विद द क्वेश्चन और नॉट, समझ आया कि नहीं आया। ऑनेस्टली सच सच बताना, सबको बताना है, सबको बताना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, नाइस। सब 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 का मतलब बिल्कुल सब, कोई भी नहीं लेफ्ट आउट रहना चाहिए, एकदम क्लियर है सर, बहुत बढ़िया, क्लियर, ग्रेट, क्लियर। बट इनपुट केस समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया इनपुट केस में, बताओ ना भाई, बताएगा दोबारा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो सही, मतलब मेजोरिटी हम सबको समझ आ गए, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। भाई इसके क्या समझ नहीं आया इनपुट में, ये बताओ कहाँ दिक्कत आ गई। सर भाई तुम्हारा नेट नेट ही काम नहीं कर रहा। बताओ, क्या मुझे दो क्वेश्चन कराने थे आज, एक ही हो पाया। चलो ठीक है, बट सब कुछ समझ आ गया, बस यही बात है। सो सिंपली इनपुट फॉर लूप में नहीं ले सकते भाई, ये भी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि
मैं फॉर लूप से इनपुट लेकर उसे कहीं स्टोर कराकर एरे में स्टोर कराकर फिर मैं उसे उस वैल्यू को यहाँ डालूंगा, ठीक है। मुझे अगर वो नहीं करना, आई वांट टू सेव मेमोरी, मेरी मेमोरी घर से जा रही है, मेरी बहुत दिक्कत हो रही है ना, मुझे मेमोरी का शॉर्टेज है, तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा इनपुट यहाँ डाल दिया ना भाई, मैंने कुछ एक नई चीज बता दी, तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर इतना कंफ्यूज हो गए तो भाई थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए भी ऐसी चीजें बताना, है ना। तो ट्राई टू ग्रास्प ना भाई, मतलब एक सिंपल सी सोचो ना, ये एससी डॉट नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये इनपुट ही तो ला रहा है, ठीक है। वो इनपुट क्या होगी, कुछ वैल्यू होगी, और वही वैल्यू मैं वैसे भी यहाँ डालता किसी और वेरिएबल में स्टोर करके इनडायरेक्टली, तो मैंने सीधे यही एससी डॉट नेक्स्ट करा दिया, तो तुम दिक्कत क्या है उसमें। कॉपी एंड पेस्ट ऑन द चैट बॉक्स देन ट्राई रन, इसमें ट्राई रन, चलो भाई ट्राई रन कर लेते हैं, ठीक है ट्राई रन। ऐसा मुझे लग नहीं रही ट्राई रन की नीड, क्योंकि सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसके मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, क्योंकि तुम्हारा नेट भी बहुत वीक है ना, नो नीड, हाँ हाँ, तुम्हारी नेट बहुत वीक है, तुम्हें वैसी चीजें समझ नहीं आ रही। भाई बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तुम चैट में ड्रॉप कर दो। चलो सुनो, एक चीज सबको सबको कह रहा हूँ, 5 मिनट 6 मिनट है हमारे पास, तो कोड को पेस्ट कर दो भाई, मैं तुम्हें कोड ना व्हाट्सएप पे दे दूँ, तुम वहाँ देख लेना, ठीक है। एक चीज बताओ जल्दी से, ये ऑल्टरनेट वाला जो है ना, क्या है ये क्वेश्चन, ऑल्टरनेट नोड्स ऑफ सिंगल इंग्लिश, ठीक है। ये मैं तुम्हें उस पर रिवर्स, सॉरी रिवर्स ऑल्टरनेट नोड्स ऑफ सिंगल इंग्लिश, ठीक है। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे करना है, ठीक है। जैसे एज एन एज अ होमवर्क 2 दिन है तुम्हारे पास भाई, पर इसमें ना करके लाना सब, ठीक है। यस यस जो ड्रॉप कर रहे हैं ना, सब करके लाना, वरना फिर बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ, तुम करके लाओगे कि नहीं लाओगे तो ही यस लिखना, नहीं हो रहा है गिरिराज मेरे भाई, मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूँ, तुम ट्राई करना, अगर फिर भी नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अगर ट्राई नहीं करके आओगे तो दिक्कत है, ठीक है, तो दिक्कत, तो बता दो सब कि ट्राई करके आओगे कि नहीं, तभी अप्रोच बताऊंगा, कर लेंगे सर, ठीक है। मतलब मुझे मैंडेटरी ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे सबसे आंसर चाहिए, सारे टेस्ट के पास चाहिए, पर तुम ट्राई करके लाओगे ना, मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है, करेंगे, चलो ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास, ठीक है। यस सर विल ट्राई माय बेस्ट, ग्रेट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग विदाउट यूजिंग कंटिन्यू कीवर्ड वन टेस्ट केस इज फेलिंग इन प्रीवियस प्रॉब्लम व्हिच दैट वुड बी without using continue, that must be somewhat, that must be somewhat equals to see, we are again and again making head equals to null, okay, we are again and again making, sorry, we are making head equals to 10, so that head is also getting moved, the head is also getting moved forward, okay, so that is the failure of, that is the failure case obviously, if we are moving head to the end of the linked list, so why, there is no significance, then there is nothing left, है ना, so that's why the edge cases must be getting failed through that only, okay, that's what I can think as of right now, है ना। See what the question says is, suppose you have linked list 1 2 3 4, then after reversing the alternate nodes we have 1 3 4 2. Here what happens is, the linked list on the odd, the linked list on the even positions, the linked list, the nodes on the in the even position, ठीक है, एक ही just try to understand in a single go, ठीक है, as we are running out of time. The nodes which are present at the even position, they are getting swapped, ठीक है, they are getting swapped. In the expected answer you can see the 2 is getting swapped with 4, ठीक है, we had 2 first then 4, but here we have 4 first then 2, okay. Try to understand it like this, try to understand it like this, I'll explain you chart, yeah, try to understand it like this, we have 1 2 3 4, for the even positions, for the nodes at even position they are getting swapped, okay, they are getting swapped, and for the nodes at the odd position they are just getting interlinked together, so it becomes 1 and 3, okay. The nodes at the odd position they got attached together, so it becomes 1 and 3, and what will be the continuation here, this 2 and 4 will get swapped, so after getting swapped 4 will come first, then will come 2, so this is my expected output, okay, this is my expected output for this particular input, okay. Now let's come quickly take one more example.
2 4 6 8 10 is my expected 2 4 6 8 10 is my input and 2 6 8 10 8 4 is my output. ठीक है, 2 2 4 6 8 10 they are at even position. ठीक है, they are at odd position. ठीक है, they are at odd position. So for the inputs at odd position they will get attached together. 2 6 10 they got attached together, and the odd even position nodes will get swapped. So it will become 8 4. Okay, it will become 8 4. Now 2 6 10 8 4. Yes, this is my answer. 2 6 10 8 4. Now just listen properly. Listen properly. I will do what? See, you can remember the concept which we used in deletion of the nodes. In deletion of the nodes, what we used, we simply removed the connection. Okay, we simply removed the connection. That means if we want to remove something, if we want to add something, if we want to change the order of the linked list, we can simply do it with the help of dot next. Okay, we can do it simply with the help of dot next. Now what I can do is I can attach the nodes at the odd positions together. Okay, I can attach the nodes at the odd positions together. Okay, that means 2 4 6 8 10. This is odd, this is odd, this is odd. Okay, I will attach using dot next. I will attach the nodes at odd position together. Okay, so what it will become? It will become 2 6 10. Okay, and after that I'll have 4 and 8. Okay, now I will do one more thing. I will reverse these two nodes. I will reverse these two nodes. Okay, so after reversing these two nodes, what will be my answer? My answer will be 2 4 2 6 10 8 4. 2 6 10 8 4. This is what I'm desiring. This is what my expected output looks like. Okay, so I can attach the nodes at the odd positions together, and rest of the nodes I can reverse them. Okay, I can reverse them. It is equal to swap. Okay, 4 8, reverse it, it will become 8 4. Simple. So this is how this particular question will get solved easily. Okay, this is the easiest approach which I can think of. Okay, and easily solve bhi ho jayega. This will also get solved easily because we have done few questions related to this approach, that using reverse and using the interconnection of the nodes. Okay, I'm using the interconnection of the nodes. I'm interconnecting the nodes in a different way, and that this is what we can do easily, hai na? So this is the approach. This is the approach which you have to try by your own. Okay, just do give it a try with a full dedication. ऐसा नहीं कि मतलब don't just do it for the formality sake, for the sake of just formality. Okay, 4 एड्रेस हो जाएगा अगर अनलिंक करेंगे, राइट? 4 एड्रेस खोएंगे तो उसके लिए सुनो ना, खोना नहीं है ना, 4 का एड्रेस हो जाएगा। हाँ, बस ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो सिंगल लिंक लिस्ट है। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट है, मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो 4 तो अगर निकल गया तो मैं 4 पे वापस थोड़ी आ सकता हूँ। आई कैन नॉट कम बैक अगेन टू द 4, राइट? एंड 4 का एड्रेस विल लॉस्ट इट समवेयर। सो डू वन थिंग, डिप्लॉय 2 पॉइंटर्स। ठीक है, यूज 2 पॉइंटर्स। 1 पॉइंटर विल बी ऑड पॉइंटर and 1 pointer will be even pointer. ठीक है, start odd pointer from head. ठीक है, and start even sorry, this is my input ना, start odd pointer from head and start even pointer from head dot next. ठीक है, head dot next will point towards here ना, so start it or even pointer from here and start odd pointer from here, so we will not lose 4 also, and you can take care of 4 6 and 10 from here. ठीक है, do something like this, you'll get to reach your answer and you'll not lose any of the notes. ठीक है, समझ गए? ओके, थैंक यू, ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, गॉट इट। ठीक है, सबको समझ आ गया ना? सबसे मुझे एफर्ट्स चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एफर्ट चाहिए कि भाई हाँ हमने ट्राई करा, हुआ नहीं हुआ, दैट इज सम अनदर केस। ठीक है, आई डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, मुझे एफर्ट चाहिए तुम लोगों से, जेन्युइन एफर्ट चाहिए। ठीक है, जेन्युइनली बैठ के सोचना और अच्छे से करके लाना, 2 दिन में आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, इतना टफ भी नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। चलो जी, बहुत बढ़िया।
थैंक यू सो मच, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा, सेम टू यू ज्योति, सेम टू यू, एंजॉय योर वीकेंड एंड पढ़ाई भी करना, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय, यू कैन सर लीव। हाँ जी, चेक सर मेरा कोड बता दो, हाँ वो 2 हाँ, एरर बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है? सर मैंने क्या किया है, एकदम सिंपल बेसिक इंसर्ट करने की कोशिश की है और उसको प्रिंट करने की कोशिश की है, एकदम सिंपल सुनो वाला कोड है। सुनो अभिषेक, मुझे क्या कर सकते हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है, तुम्हारी क्लास हैम्पर होगी। मुझे व्हाट्सएप कर देना कोड, तुमने क्या लिखा है, क्या करा है, ठीक है, एंड क्या दिक्कत है, ठीक है? कर सकते हो ना ये तो? लो सर, अभी कर देता हूँ। हाँ, मतलब मुझे कर देना ताकि तुम्हारी क्लास हैम्पर ना हो, बस इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो, सर एक सेम चीज टू और यू, पूछनी एंजॉय योर थी वीकेंड। अभी। ओके, थैंक तो यू, आपने जो बाय। कोड भेज रहे हैं ना, उसके साथ ना वो ऐड कर दो, एक कमेंट की कौन सा क्वेश्चन के लिए, बाद में वो सब मेशी हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, बाद में याद नहीं रहता, समझ गया। कंपेयर टू लिस्ट, ठीक है, आई एम शेयरिंग इट ऑन व्हाट्सएप, ओके, चलो, सर थैंक यू। मैंने आपको वो भेज दिया, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, मेरे पास आ गया, ओके, ग्रेट, और ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय। सर मैंने एक चीज और है, मैंने ना कोड में वो टैग्स भी डाले, कमेंट्स भी डाले हैं, एक कमेंट्स भी देख लीजिए, कोई करेक्शन होगा तो, या ओके कुछ ऐड करना ओके, मैं होगा। देख लूंगा, चलो ठीक है, बाय बाय। हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सेम टू यू, बाय बाय, चलो बाय।